Yeah. Good morning, everyone, and welcome to this webinar. I am Pratik Jain, and I head the products at the Digital Wealth Business of Anand Rathi. And as you know, today we would cover the portfolio review formats, which we offer to our clients of their existing portfolios. So, first, I would like to share actually. So, we plan to do a series of webinars. So, in our partner contest meeting, actually, we discussed the three main success mantras which our partners actually used, through which they got the success last year. Our private wealth business is also using those mantras, and we would want to share this mantra with you all and how we can actually grow our business together. So that was the objective. Uh, and we thought that let's share this and let's have a proper series of webinars around this. So just let me share some data point on what are these three success mantras. We'll cover one part today, and I will let you know the next sessions when are we conducting those sessions. But this is something which has been a success mantra, and we thought if we all can actually follow that, we will have that success together. So just let me share that presentation. I hope the presentation is visible. So navigating through success, the success mantras. So first one was the balance sheet approach. So whenever we meet the client, we always use the balance sheet approach. We don't look at liquidity. We always ask him that what is his overall balance sheet? It's like how much is there in equity, how much is there in debt, in sub asset classes like mutual funds, PMS, direct equity, in bonds, PPF, EPF. And then you actually decide his asset allocation, right? So this balance sheet approach is critical. So when we look at his overall portfolio, if he has investments in mutual funds, if he has investments in direct equity, if he has investments in PMS, how we can actually help him in reviewing those investments. That is something also I think so is very critical, that we help him review those investments. Is he doing well or not? Is there a process behind his investment strategy or not? I think so that's a very critical part, because most of the times we've seen that the client actually does things in a very haphazard manner, right? He might have multiple IFAs suggesting him, and he would be doing piecemeal across distributors. So how actually we can help him in making him understand that how his portfolio is doing? I think so this is something which is very critical. So that's where we come in, where we say that you should review your portfolios, be it mutual funds, be it stocks, be it PMS, how we can actually help him review his portfolio and tell him that how he's doing. If he's doing well, we appreciate it. If he's not doing well, then I think so that's where the actionable comes in, where we tell him that what are the gaps and how he can fill it. So, of course, the new format, I'll share the format. So I'm not covering this, but we will share what are the formats which we offer to our partners and on the client portfolio, and how actually you can help and use this in getting more monies from your clients. So just to give you a glimpse of the portfolio summary which we did, the reviews which we did. So we did 681 reviews in last financial year across 104 partners, which is an average of only 6.5 portfolios. I think so we all can do this number in a month rather than in a year. So I think so a lot of focus, if we can do this, is something which is very easy. You just need to get a portfolio from your clients, and most of the clients have investments across. It is not that you would be managing the entire money. There would be still some which you would be doing outside. We are just telling him, sir, review कर लो, sir, एक health checkup कर लो, जैसे health का check करते हैं periodically. I think so portfolio का check करना बहुत जरूरी है, sir. And this is free, this is complimentary. So most of the clients will not say no also कि नहीं करना है मुझे. सर सिर्फ एक पोर्टफोलियो रिव्यू करना है जिसमें आपको पता चलेगा, कुछ दो चीज पता ही चलेगी सर आपको आपके पोर्टफोलियो के बारे में, राइट? So portfolio review is critical. So what we did last year was only 6.5 portfolios. I think so we can do this every month. I think so every partner can do this every month. Out of the 681, 235 clients converted. So we had a 35% conversion.
means 65 was opportunity. मतलब 65% आज भी है जो tentative है. We can go back to them. We can tell them, sir. So we've shared one data point also with the BDNs. The BDNs would have shared with the partners who have done reviews over the last 3-4 years कि सर आपने अगर जब रिव्यू किया था तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है वीजा वीज आपने अगर मेरे साथ मूव किया होता तो आज पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होती compared to Nifty. I think so we can show that data point. So there are two parts here. One is of course the conversion is 35% which we can take it higher. And जो 65% opportunity है वहां पे we should definitely go back to the client जिसका हमने रिव्यू किया था क्या है क्लाइंट के पास और उसको दिखा सकते आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू ये था आज अगर आपने उस दिन अगर हमारे साथ मूव किया होता तो आज वैल्यू ये होता निफ्टी के साथ वैल्यू ये होता आप आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखा लो सर क्या हुआ है सो वी कैन डायरेक्टली शो हिम सर कि क्या वैल्यू डेफिनेटली शो टू द क्लाइंट कि this is value what is your current value and how we can move and उसका benefit क्या हुआ है so that is one right second the money mobilized so almost 45% of the portfolio 3 crores money is something which was got through from these two things मतलब अभी भी 55% क्लाइंट का पोर्टफोलियो है वो बाहर है यहाँ से हम वो भी पोर्टफोलियो मूव करा सकते हैं so when we review the portfolio there are certain things in which the client entire portfolio he moves only part या जहाँ पे short term होगा तो हमने ही recommend नहीं किया होगा client को क्या so that is another opportunity which we can definitely move so this is one more focus idea right focus area point and average AUM so 38 lakh of portfolio money is not converted मतलब 73 crores 5 lakhs जब वो क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया था जिसका कन्वर्ट हुआ है एवरेज टिकट वाज 35 lakhs जिसने पोर्टफोलियो रिव्यू किया है और उसने इन्वेस्ट किया है उसका एवरेज टिकट इज 35 lakhs 38 lakhs नहीं कन्वर्ट हुआ है तो दैट्स अ 55% अपॉर्चुनिटी एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टैट था कि ओवरऑल जितने क्लाइंट्स ने अकाउंट ओपन किया उसका सबका अगर एवरेज टिकट देखूं तो 12 लाख था बट जिसने रिव्यू किया उसका टिकट साइज 35 lakhs था सो रिव्यू करने से you also as a partner get a higher ticket and more money from the client this is also being observed I think so this is a very important data point and it highlights that portfolio review is important client के लिए तो बहुत important है क्योंकि client एकता ही नहीं है but as a partner I think so we play a very important role where we initiate the client and we tell him sir that what's the importance of this review and what you will get it client के लिए तो हर चीज important है क्योंकि उसको उसके पोर्टफोलियो के बारे में ज्यादा चीजें पता ही नहीं होती क्योंकि वो प्रोडक्ट लेता है राइट सो ये फॉलो करने से आपको क्या फायदा होगा दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लाइंट इज गोइंग टू बेनिफिट बिकॉज माय प्रोपोजिशन इज द सेम राइट मेरा प्रोपोजिशन कोई अलग नहीं है क्लाइंट के लिए या एक क्लाइंट के लिए अलग है दूसरे क्लाइंट के लिए अलग नहीं है बट वी हैव टू शो हिम दिस सो पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ जो क्लाइंट कन्वर्ट हुआ है उसने 35x का एवरेज टिकट लाया है सो दैट आल्सो हेल्प्स यू गेटिंग मोर मनी एंड ऑफ कोर्स गेटिंग मोर रेवेन्यू राइट सो दिस इज द पोर्टफोलियो रिव्यू समरी आई थिंक सो वी कैन डू अ very huge number this year where partners can actually play a very important catalyst in actually helping the client. I think so this is a very critical data point which you should definitely look at. So this was the first one, which was the balance sheet approach. The next webinar which we'll do on the knowledge bites, that a lot of knowledge notes which we share, which help the partner and inform the client on taking informed decisions. Not panic on the various news which comes in the market. It comes every day, it comes every minute. Important data points क्या देखने चाहिए. This is something which we share through our knowledge bites, which we'll cover in the next session. And the last one is marketing activities. That number of marketing activities which our partner did through webinars and WhatsApp, and how it has helped in creating more leads. Almost 27% in the last financial year. I think we can do much more here, and how we can help you in getting more leads. I think so that's the other idea which we would share in the third webinar. But today we would focus on the balance sheet approach and the portfolio review formats. So I thought we will just highlight that why this is important, and then we would get through the review formats that क्या दिखाते हैं हम मतलब portfolio review में what do we show and how it is an actionable. So there are portfolio reviews for mutual funds,
There is portfolio review for PMS and there's portfolio review for direct equity. I will share the formats and I'll explain that what do we show and how do you present this to your client. इससे आपके client को क्या फायदा होगा, उसको क्या पता चलेगा. It's a free of cost, so I don't think there is any cost involved. So you just need to get the portfolio review. I would suggest you just generate a cash statement. Cash statement generation is very easy. You can just ask your client कि सर आपका email ID कौन सा है, and उस email ID पे आप cash generate करके you can get the cash statement from the client for review. It's a very simple step. It takes hardly 2 minutes. I think so. Most of you know this. कि cash statement generate कैसे करना है and how you get the portfolio from the client. You just need to share the with us for mutual funds and we can do the review. Of course, for PMS, you need to get the account statement, and for stocks also you need to share it in a particular format of the ISIN and the quantity, and we can help you do the reviews. But mutual fund, a cash statement gives us much more information. So I'll share first the mutual fund review format. We mentioned there parameters. So just let me share the new format. I hope the screen is visible. This is, so there are two formats. There is a cash here, but this review format gives is that client का actual return कितना था. So transaction wise calculation होता है यहाँ कि उसने जब invest किया था, multiple transactions are taken into impact, right? So जिस दिन से लेके आज तक उसका क्या रिटर्न्स है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं विद अगर उसने उसी दिन निफ्टी में डाला होता तो उसका क्या रिटर्न बनता था. तो वी आर एक्चुअली शोइंग दैट व्हाट इज द अल्फा. पहली बात, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स डोंट नो व्हाट देयर पोर्टफोलियो रिटर्न इज बिकॉज़ ही इज डूइंग इट एट मल्टीपल पीपल. सो यहां जनरेट किया है निफ्टी में, अगर डालता तो निफ्टी ने क्या रिटर्न जनरेट किया है. सो वी कम टू नो दैट बॉस बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है, राइट? वी टॉक ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर्स दैट last year, as we mentioned is Shikhar also, that one client said बस मुझे 25% रिटर्न मिला है last year, बहुत अच्छा रिटर्न है, पर उसको पता ही नहीं है यार. I think so is very critical, so we can show this to the client. Other thing is we are showing is कि यार उसी दिन अगर उसने हमारे म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो में डाला होता, आनंद राठी मॉडल पोर्टफोलियो में डाला होता तो क्या रिटर्न्स होता था. So that's the, so that is something which we are showing. We are also showing what is his asset allocation across large cap, mid cap, small cap stocks. मतलब large cap में कितना allocation है, mid cap में कितना allocation है, small cap में कितना allocation है. ये बहुत critical view of our model actually tell him that what's the rationale that why we've chosen a 50 20 30 तो हमने small cap बढ़ा दिया था, या ऐसा हम अगर change करेंगे तो क्यों change करेंगे. There is a rationale, so that is the first step which we decide. We can ask this to the client, सर आपको पता है क्या कि कितना है large, mid and small, और अगर है तो क्यों है. तो ये बहुत important data point है, right? Then we also show him number of schemes, number of categories, right? So here I have actually a sample portfolio जिसका हमने client का MF audit किया था. So I'll just show you this report and what you need to explain to the client. So this was a client, right? His current portfolio value is 1.18 crores. Last 5 साल का returns है, last almost 7 साल का returns है. So his first April 2007 purchase or 59 lakh 4 lakh का redemption किया है. So this is based on the cash statement which the client has shared. So 21 lakh का opening value था as on 1st April 2017. 1st April 2017 से Feb 24 he has done redemptions of approximately 4 lakhs. 59 lakhs का purchase किया है, right? Might be through SIP or might be through lump. कुछ आ जाएगा. Total net inflow, that is 59 minus 4, which is 55 lakhs is the net inflow in the last 7 years. Closing value as on 29th Feb 2024, that's the value which the client has shared in his cash statement. जो client ने बताया है, उसकी value है 1.18 crores. That's the current value. कितना हुआ है तो 42 lakhs का gain हुआ है उसका. और आज की current value जो है तो that's the notional gain which the client has, which is 42 lakhs. Now IRR of the mutual fund portfolio, client के portfolio का IRR is 11.81%. So we are showing the actual return to the client कि सर आपका per annum return is almost 12%.
This number is itself, I think, so a very critical thing which a client will not know, क्योंकि इस client के multiple distributors है. See, we can see here 9 distributors है clients के पास. तो उसको ओवरऑल उसके पोर्टफोलियो का रिटर्न्स कभी पता भी नहीं होगा. इंडिविजुअल शायद पता भी हो, साथ में तो पता ही नहीं होगा. तो सर यही दिखाने के लिए सर आप मेरे को आपका पोर्टफोलियो दे दो, मैं रिव्यू करके दिखा सकता हूँ. दैट आई थिंक सो वेरी सिंपल पिच which shared with our clients ki sir the screen is full inside. See, just 1 minute. Is the screen visible now? Is the screen visible now? Anyone can just confirm? Now screen is. I think so. Now the screen is visible. Now I think so. Is it visible? And I have 1-2 confirmations, but thank you. I'll just cover the first slide again. Just so this is a sample portfolio. This is actually a portfolio of a client which we've reviewed. So ये बंदे का was once. This was spread across 9 distributors. 976 invest किया था. Of course, across various years. उसका value है 1.18 crores है. Gains है 42 lakhs का. This portfolio review format में और लिया है from 1st April 2017 till current date. मतलब जिस डेट का उसका कैम स्टेटमेंट है. तो अगर 29 फेब था है तो 29 फेब का वैल्यू है. 1st April 2017 को क्लाइंट की ओपनिंग वैल्यू 21 lakhs. From 1st April 2017 to Feb 24, क्लाइंट ने 4 लाख की रिडेम्पशन किया है. टोटल परचेज 59 lakhs का है. नेट इनफ्लो ऑफ कोर्स 59 माइनस 4 55 lakhs का है. और आज की क्लोजिंग वैल्यू 1 करोड़ 18 लाख. इसमें एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो दिख रहा है ये है कि क्लाइंट का ओवरऑल इज 11.81%. नाउ दिस इज अक्रॉस 9 डिस्ट्रीब्यूटर्स पुट टुगेदर, राइट. ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिला के 11.81 है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट को उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पता ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर नॉन डिस्ट्रीब्यूटर है तो शायद उसको उसके इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर का रिटर्न शायद पता होगा, बट ओवरऑल 9 का मिला के तो पता ही. दैट्स ओनली एन इनफ हुक व्हिच वी कैन शेयर विद द क्लाइंट दैट व्हाई ही शुड डू अ रिव्यू. मतलब क्यों सर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए और टाइमली और पीरियोडिकली क्यों करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ चेक भी हम पीरियोडिकली करते हैं वैसे ही करना चाहिए. और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि सर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है. दैट्स द फर्स्ट पार्ट. मतलब उसको एटलीस्ट उसके पोर्टफोलियो का रिटर्न खुद का तो पता होना चाहिए, राइट. द सेकंड इज दैट उसी दिन, मतलब जिस दिन उसने ऐसे ये जो 55 lakhs का इनफ्लो है, इसमें 110 परचेज ट्रांजैक्शंस है. I hope now it is smooth and visible. If anyone can just confirm again, I'm just checking again so that it's not an issue.
So I started with the review again. Your voice goes on. I don't know. I have some network issues. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Yeah. Hello, everyone. I have actually changed my place, so I hope this is better. I hope I'm audible now. So this is the NF audit review which I was discussing. So I'll just brief again. I know I'm repeating, but for the benefit of all. So this is, we received the cash statement and we've done the review. So this is from a period of 1st April 2017 till date of the cash statement which the client has generated. This client, this is actual client, is a sample which we are showing. So he had investments across multiple distributors, which is 9 distributors. Invested 76 lakhs. आज की वैल्यू उसकी 1 करोड़ 18 लाख है, राइट? उसका IRR है 11.81, मतलब सब नॉन डिस्ट्रीब्यूटर मिला के उसका IRR is 11.81. परचेजेस है, रिडेम्पशंस है. व्हाट वी हैव डन इज कि जिस दिन उसने उसके जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, अगर उसी दिन उसने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता तो उसके पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न बनता था. सो वी आर कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल, वेयर ही इज इन्वेस्टेड इन हिज पोर्टफोलियो अक्रॉस हिज डिस्ट्रीब्यूटर्स. उसी दिन अगर निफ्टी में डालता तो क्या रिटर्न बनता था. तो रिटर्न्स वर 13.92, मतलब निफ्टी ने 14% दिया है एंड क्लाइंट के पोर्टफोलियो ने 12% दिया है अप्रोक्सीमेटली. तो इस अल्फा तो जनरेट नहीं हुआ है, इज एक्चुअली परफॉर्म्ड पुअर देन द निफ्टी, 2% बिलो देन द निफ्टी. आई थिंक सो ये बहुत क्रिटिकल डेटा पॉइंट है विच वी कैन एक्चुअली शो टू द क्लाइंट. सर कि निफ्टी ने 14 दिया है, अपने पोर्टफोलियो ने 12 दिया है. सो देयर इज समथिंग विच वी नीड टू डू. आई थिंक सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच वी कैन शो टू द क्लाइंट, दैट वेयर द गैप इज, राइट? Of course, there are dividend receipt and average Nifty level, so ये numbers है. Second, what we show is कि ये portfolio किस किस schemes और किस किस categories में distributed है, right? So this portfolio has 26 schemes across 11 categories. So there are multiple categories in equity, right? And multiple number of schemes the client has. So he has 26 schemes across 11 categories. Now ये कंसोलिडेशन का ये फायदा होता है कि सब कुछ पता चल जाता है क्लाइंट को भी दिखने में कि सर 26 स्कीम है, बहुत ज्यादा स्कीम्स है सर, और 11 कैटेगरीज है. मतलब सर टोटल 14 में से आपने 11 कैटेगरीज तो ले ली है. The allocation would be small in lot more schemes and lot more categories which we can also highlight, right? So ओवरऑल एक व्यू मिलता है क्लाइंट को भी कि यार मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो कितनी स्कीम्स है, क्या वैल्यू है, क्या वेटेज है, और कितनी स्कीम्स और कितनी कैटेगरीज में बाइफरकेटेड है, राइट? वी ऑल्सो यू कैन हाईलाइट हियर दैट सर कौन सी कैटेगरी जो है जो हम नहीं रेकमेंड करते. सो वी डोंट रेकमेंड दी बैलेंस फंड्स, वी डोंट रेकमेंड दी हाइब्रिड फंड्स, वी डोंट रेकमेंड द सेक्टोरल फंड्स. सो वी कैन डिस्कस दिस
with the client there, but क्यों डाला है सर आपने यहाँ पे, right? Then actively and passive, तो active में कितना है, passive में कितना है? This is also one more important data point which we can share to the client. सर के active में क्या है और passive में क्या है, right? And the most critical part is the market cap split. Large cap, mid cap, small cap stocks में कितना है? So this client had 76% in large, 18% in mid, and 5% in small. So is this by choice or is this by chance? I think so. This is something which is very critical. You all know at Anand Rathi, the model portfolio, there is a selection process in which we do an in-depth analysis. So the first step is कि यार large cap, mid cap, small cap में क्या allocation होना चाहिए. जैसे last year हमने small cap का allocation 10 से 30% कर दिया था. That's the first thing which we did, right? So our allocation was 50% large, 30% small and 20% mid. फिर हमने एक और कॉल लिया था मार्च में कि हमने स्मॉल कैप में we realigned the portfolio and we reduced it to 20%. So our current model portfolio was 50-30-20, where 50 was large, 30 was mid, and 20 was small. So ये first step है, and there is a lot of in-depth data and study goes in selecting or deciding what should be the market cap split. ये split client को बताना बहुत जरूरी है कि यार कहाँ पे है अपना portfolio. I think so ये भी पता नहीं होता है client को. This is another valuable input which we can show, and we can tell him that why we are at a 50-30-20. Then सेम थिंग सर, आपने जब आपने आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, अगर उसी टाइम आपने अपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता, सो व्हाट वुड हैव बीन द रिटर्न्स? सो इन दिस पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स द मॉडल पोर्टफोलियो डिलीवर्ड अ 6% अल्फा. सो जो क्लाइंट ने 76 लाख इन्वेस्ट किया था, जिसकी वैल्यू उसकी 1.18 करोड़ हुई है, अगर उसी टाइम पे अगर उसने आनंद राठी मॉडल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू होती 1.51 करोड़. मतलब 33 lakhs का additional alpha we would have delivered to him if he would have moved to us. Now this number, I think so numbers makes a lot more impact, right? 33 lakhs is almost 30% of his overall portfolio. Yeah? That's a huge number. So 6% or 2% or 3% over a 1 year might not look big, but over a 7 years gives you a huge number. So, and in chart form, I think so it depicts much more. So that's why this number is there. And यहाँ पे distributor के नाम भी है कि किस distributor के पास कितना investments है. So this is another important data point which also you can share कि आपको भी पता चल सकता है आपके client के पास से कि भाई आप कितना manage कर रहे हो और बाहर कितना manage हो रहा है. So that is something which is an easier thing which we can get the client to realign, right? So this gives the data point of कि कितने distributors के through कितना investments है, right? And alpha जो हमारे portfolio ने deliver किया है. Then of course there is a process of how we can actually move here, but this is the most critical data point जो MF audit का जो highlight है कि एक तो client को हम उसके portfolio के returns बता रहे हैं. We are also showing him कि अगर Nifty में डाला होता तो क्या returns आते थे. Third thing which we are showing is कि हमारे model portfolio में move करता तो क्या returns आते, right? So what is the additional returns we would have delivered? Fourth, the mix of large cap, mid cap, small cap कि large में small में आपका क्या allocation है and क्या होना चाहिए, which is something which we show. The other important point of the show is कि यार कितनी categories और कितनी schemes है client के पास. See, there is a number, right? We can't have 50 schemes. बहुत difficult है ना manage करना. 500 equity schemes है यार. तो 50 मतलब 10% तो market आपने ले लिया है अगर 50 scheme है तो. That's a huge number, sir. कैसे manage कर सकते हैं, right? So this 5 inputs if which you can give to a client, I think so client appreciate करेगा कि यार ठीक है मेरा पोर्टफोलियो में मुझे क्या मिल रहा है. तो मैं अगर एक क्लाइंट हूं तो मुझे क्या दिखता है कि यार मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न्स क्या है, मेरा आज स्टेट क्या है, राइट? निफ्टी से मैं बेटर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं. आनंद राठी का पोर्टफोलियो ऑफकोर्स उसने प्रोपोजिशन सुना है तो आनंद राठी का पोर्टफोलियो हैज डन बेटर और नॉट, और अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वेयर वी कैन एक्चुअली शो हिम द प्रोसेस, large, mid, small और categories. I think so these 5-6 data points if we can show to a client, that's a very good information which we can depict to a client and we can get his portfolio. So why I'm explaining this is कि ये output है. Now input के लिए हमको client के पास जाके उसका सिर्फ portfolio मांगना है और सिर्फ cash generate करना है, and we can get this done. I think so this is something which is very critical. This would really help in getting more conversions also, because numbers ना, numbers don't lie. It's like जो client का portfolio का number है हम वही दिखा रहे हैं, हम और कुछ नहीं दिखा रहे हैं, right? So these are pure numbers, and numbers data I think so speaks. So that's one MF audit
का फॉर्मेट जो है, जो हम रिव्यू करके दे सकते हैं, राइट, विच वी कैन शो टू आवर क्लाइंट्स, दैट्स द फर्स्ट फॉर्मेट. जहां पे क्लाइंट ने कैश स्टेटमेंट नहीं जनरेट किया है, वी विल नॉट बी एबल टू जनरेट दिस, बट वी ऑल्सो हैव अनदर फॉर्मेट ऑफ एमएफ रिव्यू which I will show. I'll just check on that. Hope I am audible. I hope I'm audible. There is no disturbance, so I will continue. Thank you. I am moving to the next one, which is the MF review, which we are doing currently also. This is something, the audit one is something which have been added over the last 2-3 months. But MF review हम पहले भी कर रहे थे, उसमें हम और 2 data points देते हैं. There are certain things which we don't show there because it's not possible. तो जहाँ पे client ने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैश नहीं जनरेट किया और ऐसे ही अगर डिलीवर करता है, ऐसे ही भेज देता है, तो वी डू द रिव्यू इन दिस फॉर्मेट व्हिच I'll show. So this is the review format. Now this is another client. Similar, first we give him a gist of कि sir where do you stand, कि आपका पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम्स है और कितना एलोकेशन हर स्कीम में है, कितनी कैटेगरीज में है. So this client, as you can see, the number of schemes are huge. He has 28 schemes, 28 स्कीम है, right? 14 out of 28 schemes constitute less than 2%. तो यही एक एक्शनेबल है कि सर 28 स्कीम है, 28 में से 14 स्कीम में एलोकेशन 2% से कम है. मतलब ये स्कीम सर अगर वैल्यू में डबल भी हो गई अगले 4-5 साल में, तो पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट होने वाला है. सो दिस इज वन एक्शनेबल विच वी कैन एक्चुअली सजेस्ट टू अ क्लाइंट, सर कि एटलीस्ट कंसोलिडेट तो कर दो पोर्टफोलियो. 28 स्कीम में अगर 2% से नीचे 14 स्कीम में, तो क्या वैल्यू क्रिएट करने वाली है? कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट करेगी सर. अगर कुछ हो भी गया, इनकॉन्सिक्वेंशियल कंट्रीब्यूशन है. सो दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन, आई थिंक सो, इमीडिएटली मूव आउट. देन वी आल्सो हाईलाइट हियर दैट how much percentage allocation is there in categories which we don't recommend. So we don't recommend balanced funds, we don't recommend thematic funds, we don't recommend sectoral funds, we don't recommend index funds, right? So there are certain categories which we don't recommend. So agar client ka investments which categories mein hai, so that is something which we can highlight and we can tell him the reason that why we don't actually recommend those categories, right? So that's the first data point and gist which we are sharing with the client, right? The second is the selection process. That what is our selection process? So I'll just cover this quickly. So first of all, why you need a selection process? I think so wohi establish karna bahut critical hai. So there was one data point which was shared publicly कि 500 में से 25 स्कीम ने 25 साल कंप्लीट किया था इन जुलाई 22. 25 स्कीम में टॉप परफॉर्मिंग स्कीम ने 23% रिटर्न दिया था. एवरेज उस 25 स्कीम का 15% था, पर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम ने 7% दिया था. तो म्यूचुअल फंड तो सही है, बट हर म्यूचुअल फंड सही नहीं है. यू नीड टू हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस कि किस स्कीम में डालना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए. सो दैट्स वेयर द नीड कम्स इन कि यार आपका म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए प्रोसेस होना बहुत जरूरी है. वी हैव अ 125 मेंबर टीम which is there in creating this portfolio and monitoring, and our aim is very clear. We need to deliver an alpha of 3% per annum over and above Nifty over the long term. Alpha की बात करूं तो last year we delivered an alpha of 16% over the mutual fund portfolio. मतलब Nifty ने 29% दिया, मेरे model portfolio ने 45% दिया है. We delivered an alpha of 16%. Am I aiming a 16% this year also? The answer is no. We are aiming a 2 to 3%. We are not restricting. बट एक क्लियर कट एम होना चाहिए कि अल्फा डिलीवर करना है, सो दैट वी एक्चुअली चेक कि निफ्टी क्या कर रही है. आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स डोंट नो व्हाट निफ्टी डज, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप की एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सिलेक्शन है तो क्यों है. देन देयर इज अ प्रोसेस. तो प्रोसेस में फर्स्ट देयर आर हाइजीन फिल्टर्स दैट वी डोंट रेकमेंड सर्टेन कैटेगरीज, राइट? लाइक आई मेंशन्ड द थीमेटिक्स, द बैलेंस, द इंडेक्स फंड्स. देन 45 AMCs है, तो AMC का 3000 करोड़ का इक्विटी AUM होना चाहिए, so that we don't recommend the smaller AMCs. And scheme का 1000 करोड़ का AUM होना चाहिए, so we don't recommend the smaller scheme as well. We don't recommend any NFOs also. कि scheme को 3 साल complete होना चाहिए. So those are basic hygiene filters. Before this we said कि large cap, mid cap, small cap में क्या allocation होना चाहिए. जैसे मैंने बताया, last year we had a 50-30-20. We increased the small cap allocation to from 10% to 30%. This was over a backdrop where small cap last year had actually underperformed and delivered minus 10%. Mid cap was flat.
large cap was flat, small cap was down by minus 10%. We took a call where we increased allocation to small cap, and of course that has played well. So that's the part of the selection process. Then there are quantitative and qualitative filters. कि quantitative parameters पे scheme को evaluate करते हैं, फिर qualitative parameters पे scheme को evaluate करते हैं. There are certain proprietary ratios like the target returns, the active weights, the holiday NAV, the down capture ratio, the efficiency ratio. These are parameters which we look at, and the schemes which consistently perform better on those parameters, वो scheme shortlist होती है. Then the qualitative filter is there, where there is a committee of the CEO, the deputy CEO, Mr. Firoz Aziz, the product director, the product head for mutual funds. All this committee meets. They meet all the CEOs, the CXOs, the CIOs, the investment officers across the AMCs. And finally, a portfolio is shortlisted. So last year we had 14 schemes where we had a comfort that the fund manager will be able to deliver an alpha. We are not saying all 14 schemes will deliver, right? There will be some duds which will not deliver as well. So that is something which we are prepared with. But the ultimate aim is that the overall portfolio should deliver an alpha. So we look at it as a portfolio level and not at a scheme level. ये 14 scheme का portfolio मेरे लिए common है across all my clients. It is not different for different clients. तो ये सब चीज सब clients के लिए cover हो जाता है. This portfolio is monitored, tracked, and if there are any changes, we recommend. So currently the review is happening, and जो model portfolio में change होगा will be communicated, and we also help the client and the partner in executing this. So execution में भी help होता है. So selection is not a one-time process; it's a continuous process which we need to highlight to a client. कि सर selection होना जरूरी है कि कोई भी स्कीम ले लो सर जिसने लास्ट 3 साल में बहुत अच्छा किया है वो ले लो, वैसे सिलेक्शन नहीं होता है. We've seen कि this is actually a recipe for failure अगर आप past performance पे अगर आप select करते हो. So that's on the mutual fund selection process in a gist. We also mentioned risk. So see, returns is something which is critical, but risk भी बहुत important parameter है. So यहाँ पे mention किया है कि यार सर आपके portfolio का standard deviation 13% है, 12.94. Now what does this mean? So here we've explained what is risk. Risk is nothing but deviation from your expected outcome. कि मेरा अगर expected return से 14% है तो मेरे 14% से कितना deviate हो रहा है मेरा portfolio, that is risk, and this deviation can be calculated by standard deviation. Now we are getting back again to 11-12 standards math. तो यहाँ पे एक सिर्फ explain किया है कि standard deviation कैसे calculate करते हैं. सिंपल वे में अगर समझना है तो 14% का अगर मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, एंड सपोज स्टैंडर्ड डिविएशन इस केस में क्लाइंट का था से 13%, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है? 14 plus 13, 14 minus 13, it gives me a range. So it is 1% to 27%. ये रेंज में मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स डिविएट हो सकते हैं. This is what standard deviation gives me. The lower the standard deviation, lower the deviation in my portfolio. The higher the standard deviation, higher the deviation, higher the fluctuation in my portfolio. मेरा portfolio उतना ज़्यादा swing होगा. तो returns of course is critical. Risk is a very important parameter which no one speaks about. I think so. Risk भी बताना चाहिए client को, and numerical में बताना चाहिए, rather than सर आपका high risk taking capacity है या low risk taking capacity है, because ये बहुत subjective है. What might be high risk for me might be low risk for you, right? So if you speak in numbers, I think so it helps. So standard deviation. Now ये returns और standard deviation का what we've done is कि हमने client को वही बता रहा है कि सर मेरा wealth plus portfolio, which is a combination of mutual funds and structured products, का last 3 साल का return was 19%. इसका standard deviation था 9.67. So return divided by risk is 1.95. मतलब 1 unit of risk के लिए मैंने 1.95% return deliver किया है. सर आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन 13% है जो करंट पोर्टफोलियो है. अगर आपके पोर्टफोलियो ने मेरे से अगर बेटर किया है तो आपके पोर्टफोलियो को 25% डिलीवर करना चाहिए था. अगर आपके पोर्टफोलियो ने 25% डिलीवर किया है तो सर देन यू आर डूइंग गुड, कंटिन्यू विद इट. बट अगर 25% डिलीवर नहीं किया है सो देन सर यू नीड टू टेक एक्शन. सो इसीलिए यहाँ पे करंट पोर्टफोलियो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, बिकॉज आई डोंट नो द पोर्टफोलियो रिटर्न्स, राइट? आई कांट कैलकुलेट इट. कैश स्टेटमेंट नहीं दिया है तो आई कांट कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न्स फॉर द क्लाइंट. नाउ दिस क्वेश्चन मार्क इज, तो यहाँ पे अगर क्लाइंट बोलता है मेरे को पता नहीं है रिटर्न्स, तो वहां पे ही एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज क्लाइंट को पता होना चाहिए उसके पोर्टफोलियो का रिटर्न्स क्या है. अगर मुझे अपना गोल पता है बट मुझे पता ही नहीं है मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूं, तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं ना मेरे गोल पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गोल शुड बी क्लियर एंड आई हैव टू ट्रैक इट कि यार मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं.
तो अगर क्लाइंट को उसके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पता नहीं है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने रिस्क और एफिशिएंसी रेशियो विच इज रिटर्न डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज 1.95 फॉर माय वेल्थ प्लस पोर्टफोलियो, उससे मैं उसको एक गाइड दे रहा हूँ कि सर आपका अगर 25% से ऊपर है रिटर्न, मींस योर पोर्टफोलियो इज डूइंग गुड। अगर 25 के नीचे है सर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम ना, माय पोर्टफोलियो इज डूइंग बेटर and I am giving you my selection process, I am tracking it, I am monitoring it, and with plan B I am also reducing the risk. मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन सर 9.67 है, आपके पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन 13% है, सो रिस्क ज्यादा ले रहे हो, रिटर्न कम है, तो ऐसा क्यों करना है? So this is something which we can use to actually tell the client that sir, where do you stand and what you should do. Then scheme wise returns है और risk है and efficiency ratio है. If his efficiency ratio, scheme का efficiency ratio अगर मेरे scheme से better है तो सर ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो, अगर खराब है तो मूव कर सकते हो. So this is what we are showing: 3-year returns of his portfolio schemes and 3-year returns, 3-year standard deviation of his portfolio and the efficiency ratio. The ones highlighted in red are doing below my Wealth Plus portfolio and the journey of the Wealth Plus portfolio. So यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि सर एक साल का रिटर्न नहीं है, की जर्नी होती है, राइट? सो ये जर्नी में मल्टीपल हादसे होते हैं, तो ड्यूरिंग दोज इवेंट्स हाउ माय वेल्थ प्लस पोर्टफोलियो हैज डन कंपेयर्ड टू निफ्टी. आई डोंट नो व्हाट हिज पोर्टफोलियो हैज डन, बट यहाँ पे मैं उसको एटलीस्ट मेरे वेल्थ प्लस पोर्टफोलियो का बेनिफिट्स बता सकता हूँ. Now, what is a wealth plus portfolio? It is a combination of mutual funds and structured products in a combination of, यहाँ पे हमने 50-50 लिया है, you can do 50-50 or a 60-40, right? 10 lakhs mutual funds, 10 lakh structure. So we've taken an example of someone who started investments on 1st April 2019. Now ये client के actually जिंदगी में काफी हादसे हुए हैं. So 1st April 2019 में client ने 20 लाख डाला. Now first event happened was that Nifty touched a pre-pandemic high of 12,300 on 14th Jan. 1st April 2019 to 14th Jan 2020, Wealth Plus portfolio delivered 12.5%, Nifty delivered 7.6%. तो यहाँ पे तो मेरा portfolio अच्छा कर रहा है. Then pandemic came in. The lowest point of the pandemic was on 23rd March 2020. Right? That was the lowest point. 7,600 का level था Nifty का. My Wealth Plus portfolio from 1st April 2019 till 23rd March 2020 has delivered minus 16%. Nifty was down minus 35%. So sir, Nifty खराब था, जब ऐसा नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेगा. 35% डाउन था तो मेरा भी नेगेटिव था, but it was down by minus 16%. Almost 20% का अल्फा था सर. So I can go back to the client and tell him ना सर कि नेगेटिव था सर, but minus 20% कम गिरा हूं मैं. Most of the time the client will stay invested, right? Then the reversal happened. 9th November 2020 when market crossed the pre-pandemic high of 12,300. मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक मार्केट फ्लैट था. वेल्थ प्लस ने 11% दिया है, निफ्टी ने 4% दिया, तो फ्लैटिश मार्केट में भी डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है, राइट? एंड बेरिश मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहा है. नाउ व्हेन वी लुक एट दी पैंडेमिक के बाद पोस्ट पैंडेमिक हाई जो था, जो अक्टूबर 21 का था, वेल्थ प्लस डिलीवर्ड 19.7, निफ्टी डिलीवर्ड 19.7. सो इवन इन अ बुल मार्केट वी बीन एबल टू डिलीवर. And as of December, so this portfolio review, this is a sample, so we did it in December. Wealth Plus portfolio delivered 17% per annum from 1st April 2019. Nifty delivered 14%, a 3% alpha. Right? We've seen in the earlier presentation, a 1-2%, 3% alpha over a 4-5 year period is a big number. So this journey, I think so, gives him the gist of what the Wealth Plus portfolio does. It will help you deliver in a bull market, in a range bound market, and a bearish market. That's what the Wealth Plus portfolio does, right? Reduces the risk, increases the probability of returns, right? And accelerate your return. So mutual fund will deliver basis Nifty, but structured product will deliver at a marginal. कि सपोज आज 22,000 है तो 29,500 के ऊपर रही अगर 5 साल बाद, तो आपका 100 रुपया 200 होगा. निफ्टी में अगर आप डालते हो 22,000 में, तो निफ्टी को ऑलमोस्ट 44,000 होना होगा, जब जाके पैसा डबल होगा. स्ट्रक्चर प्रोडक्ट विल डबल योर मनी एट 29,500. तो मेरा मीटर जो है 14% का, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है. ऑन द डाउन साइड अगर निफ्टी यहाँ से 15% नीचे भी गई, स्टिल माय प्रिंसिपल इज प्रोटेक्टेड. निफ्टी में तो नेगेटिव रिटर्न हो गए, या म्यूचुअल फंड्स तो नेगेटिव रिटर्न होंगे अगर 5 साल बाद निफ्टी नेगेटिव होती है. सो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर प्रोडक्ट accelerates your returns, reduces the risk, increases the probability. So this is what we want to portray here through the journey of Wealth Plus portfolio.
Then we show the current sectoral and the large cap mid cap allocation, the same as was the audit. So यहाँ पे client का 60% large था, 22 mid था and 17% small था. We also show what is my large, mid and small allocation. So we can actually compare and again reiterate the selection process. And the number of AMCs. So this client has almost in allocation across 15 AMCs. 45 में से almost 15 AMC में client का investments है. Sir, आपने almost 1/3 industry cover कर दी है. We have allocation across 8 to 9 AMCs. I think so 8 to 9 is a good enough number. 15, 16 becomes huge. Your allocation is low. It doesn't help. So that's also one more point which we can actually show to the client. And then there is an annexure that why we don't recommend certain categories. We don't recommend index because it doesn't deliver an alpha. And as we said, मेरे objective में ही है कि मैं 2 से 3% alpha deliver करूँ. So it doesn't meet. Balanced funds. So यहाँ पे balance sheet approach की बात की थी. So always you should look at your overall balance sheet and then decide rather than give it to a fund manager जो पूछेगा भी नहीं कि क्या asset allocation होना चाहिए. वो 65-35 रख सकता है या वो 90-10 भी रख सकता है. That doesn't suit me. So we are not against equity and debt, but you should decide what should be your allocation across equity and debt rather than the fund manager deciding. तो पूछता भी नहीं है. So that's why we don't suggest balanced funds. Sectoral thematic funds again. High risk, inconsistent है because हर साल रिटर्न नहीं दे सकता है because sector goes through a cycle of up and down. And ऐसा नहीं है कि यार ये sectoral fund manager को ही पता है कि ये sector चलने वाला है. और diversified fund manager को भी पता है यार कि अगर IT चलने वाला है या अगर कोविड में फार्मा चला था तो मेरे diversified fund manager ने फार्मा में allocation बढ़ाया था. So it is not that only the sectoral fund manager knows. So that's why we don't recommend any sectoral funds. ELS we don't recommend for wealth. For your tax saving purpose, of course आप डाल सकते हो ELSS में, but 3 साल का लॉक इन है तो इसीलिए हम वेल्थ पोर्टफोलियो के नहीं सजेस्ट करते. ELSS आपको टैक्स सेविंग के लिए डालना है तो आप डाल सकते हो. So that's on the MF review. We also actually show a summary. तो जैसे हेल्थ कार्ड की मैं बात कर रहा था, we actually show a health card to a client कि सर जैसे अपना हेल्थ पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे एक रूटीन हेल्थ चेकअप करने के लिए डॉक्टर बोलता है कि यार आपको आपका रूटीन हेल्थ चेकअप करना चाहिए. तो रिपोर्ट जो आती है कि उसमें दिखाता है कि यार हीमोग्लोबिन कितना है. सो हीमोग्लोबिन 12, दैट नंबर से मुझे कुछ समझ में नहीं आता. इफ आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, आई डोंट नो व्हाट दिस नंबर इज 12. बट उसके साइड में ना एक रेंज होती है, यार 11 to 14 है तो आप नॉर्मल हो. दैट नंबर शोज मी कि हाँ ठीक है यार, मेरा अगर 12 है तो मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा है. आई एम नॉट वीक, आई एम डूइंग वेल. Based on that thought only, we actually created this health card. So this is part of जो मैंने अभी आपको जो presentation दिखाया था उसका ही एक summary है which you can use this also to show it to the client कि सर आपका पोर्टफोलियो का हेल्थ कैसा है. सी मेडिकल हेल्थ तो हम चेक करते हैं सर, पोर्टफोलियो हेल्थ भी चेक करना बहुत जरूरी है और पीरियोडिक चेक करना बहुत जरूरी है. वी यूज द सिमिलर फॉर्मेट टू एक्चुअली शो इट टू अ क्लाइंट कि सर आपकी पोर्टफोलियो हेल्थ कैसी है. दिस पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप इज बेसिकली segregated in three parameters. One is asset allocation, because it has 93% impact of your portfolio returns, right, in the long term. So asset allocation key hai. Second, portfolio construct hai, or third is the risk. So in asset allocation, there are 3 parameters. First is the asset allocation. Matlab equity mein kitna hai. So of course, this client had 100% in equity. We say an ideal range is 60 to 80%, right? So 60 to 80% आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में से 60 to 80% इक्विटी में तो होना ही चाहिए. अगर आप 30% इक्विटी में हो, so you will never be able to beat the inflation. आपका पर्सनल इन्फ्लेशन कभी नहीं बीट कर पाएगा. So at least 60 to 80% तो होना चाहिए सर आपका इक्विटी में. This client has 100%, so it is okay. He is over aggressive. Then here we can ask कि सर आपके बैलेंस शीट में से इक्विटी कितना है. तो यहाँ पे वो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हो. There is color coding, so the 100% is highlighted in yellow. मतलब अगर ideal range से बाहर है, but still not outside the acceptable range, so it's an amber. अगर ideal reference range से under है, मतलब suppose यहाँ पे अगर asset allocation 50% होता तो it would have been a red. And अगर 60 to 80% के बीच में होता तो it would have been a green. So it gives a color coding. It shows the client कि यार मैं सही जा रहा हूं या मेरा पोर्टफोलियो बहुत वेवर्ड है, और इफ देयर इज एन एक्शनेबल. सो ऑफ कोर्स देयर इज ग्रेडिंग एंड देयर इज अ पॉइंट सिस्टम. सो एवरी ग्रीन हैज अ 1 point, एवरी एम्बर हैज अ 0.5%, 0.5,
and a red has a 0. So here it is amber because it is 100%. Large cap में कितना allocation है? So out of this overall portfolio which the client had, he had a 60% allocation. We are recommending 50%. तो मैंने तो भी एक बफर दिया है कि सर 50 to 60% है तो amber दिया है कि 50 to 55 the green है, 55 to and above is 55 to 65 is amber, and then of course it is a red. So 60% था client का तो it is an amber. Here again you can reiterate कि सर mid cap, small cap और large cap का क्या allocation होना चाहिए. Allocation to non-recommended categories, he has 3%. Ideally, sir, 0 होना चाहिए. So we recommend across 9 categories. So this client had approximately 3.5% in balanced. So that's why it's an amber. Anything more than 10%, it's a red. So this is an actionable. So of course, यहाँ पे all across all three, I think so the client is not very wavered. It's okay. मतलब यहाँ पे थोड़े ही tweaks करने हैं across asset allocation. Now we look at the portfolio construct. There are 5 parameters. Number of schemes. So client had 28 schemes. We are recommending 14 schemes. 11 to 15 hai to sir ideal hai. 28 is too huge. That's something which you should definitely reduce. That's why it's a red. Then portfolio में scheme wise allocation किसमें एक scheme में 15% से ज्यादा है तो client had one scheme, I think so it was Parag Parikh FlexiCap which had almost 20% allocation. तो 28 scheme है, एक scheme में almost 20% है, मतलब 80% allocation 27 scheme में है, जिसमें हमने देखा कि 14 scheme में तो 2% से कम है. तो सर portfolio concentration is something which is very high, so it doesn't make sense, so that's why it is a red. पोर्टफोलियो एएमसी वाइज तो कोई एएमसी में 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वी हैड 19%, सो 25% से ज्यादा है तो नहीं रखना चाहिए. दिस क्लाइंट हैड अक्रॉस 15 एएमसीज बट ही डिडंट हैव एनीथिंग मोर देन 25%, सो इट्स अ ग्रीन, इट्स 0, सो इट्स अ ग्रीन. स्कीम्स विद इन कॉन्सिक्वेंशियल कंट्रीब्यूशन मतलब 2% से नीचे है तो 14% था, सो 14 स्कीम्स थी तो इसीलिए इट्स अ रेड. And do you have a backup plan? So here you can actually introduce plan B again to a client. Sir, plan B क्यों होना चाहिए? Why structured product is important? We recommend a 30 to 40% allocation. आपका 0 है. So what a structured product does, as I explained through the journey and what the structured product does, this is something which you can explain again to a client कि sir structured product क्यों होना चाहिए? Because it acts as a plan B. Because market will not deliver 14% every year. There will be periods where the market underperforms. क्लासिक केस देख सकते हैं कि लास्ट ईयर मार्केट ने 29% दिया है बट 22-23 में -1% था, राइट? तो एवरीवन इज लुकिंग एट लास्ट ईयर एंड सेइंग बॉस मार्केट बहुत अच्छा है, बट उसके एक साल पहले मार्केट फ्लैट था. तो उस टाइम पे द क्लाइंट टोन एंड द पिच इज वेरी डिफरेंट, राइट? So we need to prepare a portfolio which can work in all market scenarios. We can't just depend on the market. इसीलिए plan भी बहुत critical होता है, sir. And that's something which we need to push and pitch to the client. Last one is risk. So standard deviation. So this guy had a standard deviation of almost 13%. Nifty standard deviation is approximately 12.3. So sir, आप Nifty से 5% प्लस माइनस हो तो ठीक है सर. निफ्टी से 5% कम हो तो बहुत अच्छा है सर. जो मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन इज 9.5. सो वेरी गुड सर. अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निफ्टी से भी 5% से ज्यादा है सर तो आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो. दैट्स व्हाई इट्स अ रेड. So risk in numbers is very critical. I think so partners बहुत critical है कि आप नंबर में बताओ, because high risk, low risk, medium risk नहीं समझ में आता है, right? Then कोई अगर open ended schemes सब close ended, अगर कोई close ended schemes है तो वो भी highlight होती है. Then there is a final scoring, as I said. So asset allocation में 3 sub parameters थे, but he was amber in all. So 0.5 for all 3 parameters. So 0.5, 0.5, 0.5 divided by 3. So that's why it's a 0.5. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में 5 पैरामीटर्स थे. देयर वाज 1 ग्रीन एंड रेस्ट एवरीवन वाज रेड. सो ग्रीन के लिए 1 पॉइंट एंड रेड के लिए 0 है. सो 1 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 0.2. रिस्क में ऑफ कोर्स इट वाज अ रेड बिकॉज़ ही हैड रिस्क व्हिच इज मोर देन द निफ्टी. सो इसलिए इट इज अ 0. एंड देन देयर इज अ ओवरऑल पोर्टफोलियो हेल्थ स्कोर ऑफ 0.2. सो वेयर डज ही स्टैंड? सो आई एम क्लोजर टू 1. You are 0.2 sir. So there is a lot of gap. There is actionable sir. Immediate attention required that you need to tweak your portfolio. So यहाँ पे क्लाइंट को हम बता सकते हैं सर कि आपके एक तो सर 28 स्कीम्स है तो स्कीम ज्यादा है. 14 स्कीम्स में 2% से कम का वेटेज है. नॉन रिकमेंडेड कैटेगरीज जो है वो दिखा सकते हैं. रिस्क बता सकते हैं. लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन नहीं है. सो वी कैन डेफिनेटली शो एक्शनेबल्स टू द क्लाइंट जिससे वो
रिव्यू करके हम उसको बता सकते हैं एंड रियलाइन कर सकते हैं. So see, the objective is that we can get more money from the client and we actually do a job where actually the client benefits. I think so. इसमें समझ में भी आता है कि client का portfolio सही नहीं हो रहा है. So this is what the other mutual fund format is. One is, of course, if you give a cash, so we do the MF audit. We can do this also together. It gives you the standard deviation and it gives you a different look of how you can look at the portfolio. That's on the equity part. I'll also cover the PMS and sorry, was the mutual fund part. I'll also cover the PMS and equity, and then I'll open the floor for questions, right? Because even PMS and equity is critical. So PMSs, I think so. This is one topic where a lot of clients have PMSs, right? And PMS में भी सेम चीज, निफ्टी का रिटर्न्स पता ही नहीं होता है. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत क्रिटिकल है कि पीएमएस एंड म्यूचुअल फंड को अगर कंपेयर कर रहे हैं, सो पीएमएस से एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स. फर्स्ट इज द कॉस्ट इज हायर, राइट? सो इफ आई एम पेइंग मोर कॉस्ट, देन आई शुड गेट अ हायर रिटर्न. यू ऑल्सो पे मोर कॉस्ट ऑन द टैक्सेशन, बिकॉज जो भी चर्न होता है शॉर्ट टर्म is taxable in the name of the investor. Mutual fund में भी churn होता है, but वो client को taxable नहीं होता है. So your taxation is higher, your cost is higher, तो उतना तो ज्यादा मिलना ही चाहिए. Complexity ज्यादा है, तो PMSs have much more complexity. Taxation की complexity है, filing की complexity है. Then liquidity and exit loads. तो mutual fund में आपको T+1, T+2 में पैसा आता है. PMSs might take 5 days, it might take 10 days, it might take 15 days, and there is an exit load till 3 years. काफी PMSs में exit load 3 साल तक होता है. ग्रेडेड होता है कि फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड ईयर में कम है, थर्ड ईयर में कम है, बट 3 साल के लिए मेरा पैसा लॉक इन है. तो अगर मैं ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे मैं मेरा पैसा लॉक इन कर रहा हूं फॉर 3 years, shouldn't I get more returns? That's the objective of the client, right? तो वो अगर है तो उसको ज्यादा डिलीवर करना चाहिए. अगर नहीं कर रहा है तो देन प्रॉब्लम है बॉस. This is something which I think so we should definitely tell the client. Then regulation अगर देखें तो PMS की licenses almost hundreds में है. म्यूचुअल फंड में 45 AMCs ही है. So AMC नंबर कम है, मतलब म्यूचुअल फंड is much more regulated. Then when we look at the large cap, mid cap, small cap, म्यूचुअल फंड के लिए तो सेबी ने डिफाइन किया है कि व्हाट इज अ लार्ज कैप स्टॉक, व्हाट इज अ मिड कैप स्टॉक, व्हाट इज अ स्मॉल कैप स्टॉक. पीएमएस में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है. What might be a small cap for, say, a mutual fund might be a large cap or a mid cap for a PMS. It might be possible, right? So वहां पे भी वो मैच नहीं करता है. रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी नहीं है. It doesn't give me the portfolio every 6 months also. म्यूचुअल फंड में हर महीने पोर्टफोलियो आता है, हर रोज एनएवी आती है, राइट? सो वो एक चीज है. मॉडल पोर्टफोलियो इज ऑलवेज डिफरेंट देन द पोर्टफोलियो व्हिच द क्लाइंट हैज. म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं होता है, सबका पोर्टफोलियो सेम होता है, राइट? And lastly, also we looked at performance, and this will depict the review. So we've done this review for a client, and we'll show कि यार उसने सब PMSs लिए and how this portfolio and PMSs have done. So that's why we don't do PMS. That's the first part where you can set it कि क्यों नहीं करते PMS. सर अगर ज्यादा रिटर्न दिया है तो रख लो, अगर नहीं दिया है तो क्यों रखना है? See, one is that I am going to a PMS for more returns, right? पर वो रिटर्न्स अगर नहीं मिल रहा है एंड वो म्यूचुअल फंड को भी नहीं बीट कर रहा है, जिसमें रेगुलेशन ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, कॉस्ट कम है, राइट? So then why I'm getting into a PMS and why I'm getting returns lower than a mutual fund? So it doesn't make sense. This is something which we want to show to a client. So again, actual portfolio PMS लिया है हमने client का. यहाँ पे to review this, you need to share the account statement of the PMS, जिसमें सब transactions है PMS का. There's an input sheet which you actually share the account statement. We can create that data and then we can review it. So सेम यहाँ पे भी सिमिलर फॉर्मेट है जो म्यूचुअल फंड वाला फॉर्मेट था कि डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स है. क्लाइंट ने इन्वेस्ट कितना किया है? 12 करोड़ इन्वेस्ट किया है. उसकी वैल्यू आज 13 करोड़ 80 लाख है. क्लाइंट ने गेन कितना किया है? 1.7 करोड़, IRR 7%. सो फर्स्ट PMS उसने स्टार्ट किया था जून 2021. नाउ दिस इज अ क्लासिक केस एक्चुअली. ये क्लियरली दिखता है कि दिस क्लाइंट हैज इन्वेस्टेड पोस्ट द
पैंडेमिक राइज, कि पैंडेमिक के बाद जो मार्केट चलने लगा, इक्विटी, everyone was very gung ho on equity, he invested during that time कि सर मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट ने अच्छा भी किया है, राइट? 21 to 24 मार्केट हैज डिलीवर्ड. सो पीएमएस में उस टाइम पे डाला. What there is a lot of myth कि मार्केट जब अच्छा करता है, जब पीएमएस बहुत अच्छे करते हैं. आई थिंक सो दिस मिथ इज गेटिंग ब्रोकन हियर, बिकॉज अगर देखोगे तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो ने 60% रिटर्न दिया है, निफ्टी ने 14% रिटर्न दिया है. सो 1 crore ही स्टार्टेड विद ऑन 17 जून, देन उसके बाद और 11 करोड़ का परचेस किया है. 13.8 करोड़ का वैल्यू है, 7% का IRR है, निफ्टी का IRR इज 14.5%. सो 7 ऑलमोस्ट 7% का लोअर वैल्यू देन निफ्टी. आई थिंक सो यहाँ पे दिस इज एन आई ओपनर विच वी शुड डेफिनेटली शो टू अ क्लाइंट कि सर पीएमएस करने के बाद निफ्टी को भी बीट नहीं कर रहा है, राइट? एंड this is based on the gung ho which has happened post the pandemic, where PMS is, everyone is saying nahi PMS chalega sir. This data is showing something else and we can actually do it for all your clients. जिसका पास PMS है उसका account statement देके हम दिखा सकते हैं client को. Now this client has invested in 15 PMSs. उसने almost एक PMS का म्यूचुअल फंड बनाया है, PMS का बास्केट बना दिया है, right? 15 PMSs across PMS houses, be it Motilal or Unify or ASK or Marcellus or Ambit or Abacus or the Alpha Accurate. So across 8 to 9 PMSs, right? Tenure भी देखे तो 15 में से almost 9 have almost completed 2.5 years. तो मतलब टाइम भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट किया है. ऑलमोस्ट 2-2.5 साल 9 PMSs को हो गए हैं. मिक्स भी अगर देखें तो लार्ज कैप 54 है, मिड कैप 23 है, स्मॉल कैप 21 है. सो मिक्स इज आल्सो नॉट वेरी बैड. ऑलमोस्ट 45% इज मिड एंड स्मॉल, 55% इज लार्ज कैप. मतलब PMS जनरली द परसेप्शन इज दैट दे इन्वेस्ट मोर इन स्मॉल एंड मिड. ऑलमोस्ट 55-45 का रेशियो है, तो मिक्स इज आल्सो नॉट बैड. स्टिल द रिटर्न्स वाज 7.9%. निफ्टी का डिफरेंशियल अगर देखूं तो जिस दिन उसने पीएमएसएस में इन्वेस्ट किया, अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करता, he would have been richer by 1.89 crores. That is as of date, where Nifty has delivered an alpha of 7%. My model portfolio has delivered 19.8%. The difference is 12.6%. Absolute value में difference is 3.36 crores. मतलब 13.83 उसकी current value है. His value would have been 17.19 crores if you would have invested in my model portfolio during that same time. So value wise difference देखो, again this is almost 25% of his value, right? When you show this in numbers to the client, then he will realize यार एक तो PMS में आप डाल रहे हो, जो additional returns देना चाहिए म्यूचुअल फंड से, उसने तो निफ्टी को भी बीट नहीं किया है, म्यूचुअल फंड को तो रहने दो. और value difference is 3.36 crores across almost 3 years. So the value difference is huge. And इंडिविजुअल पीएमएस वाइज अगर आप रिटर्न्स देख लो, मतलब हार्डली ओनली वन पीएमएस आई थिंक सो व्हिच हैड अ वेरी शॉर्टर टेन्योर हैड एक्चुअली बीटन. अदरवाइज कोई भी पीएमएस ने निफ्टी बीट नहीं किया, मेरे पोर्टफोलियो को बीट नहीं किया. सो दिस एक्चुअली गिव्स अ स्क्रीनशॉट एंड अ स्नैपशॉट टू अ क्लाइंट दैट वेयर हिज पीएमएस इज, हाउ इट इज डूइंग एंड इज इट मीटिंग द ऑब्जेक्टिव. सी अगेन मूविंग बैक टू द ऑब्जेक्टिव, अगर मैं पीएमएस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न चाहिए जब मैं पीएमएस में जा रहा हूं ना. दैट्स दी पिच. सर निफ्टी बीट नहीं कर रहा है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बीट कर रहा है, तो क्यों रहना है? एंड टेन्योर भी हो गया, टाइम भी हो गया, एंड वो पीरियड भी जो था वो बहुत अच्छा पीरियड था, ऐसा भी नहीं है कि पीरियड खराब था. सो दिस एक्चुअली गिव्स यू अ स्नैपशॉट अक्रॉस ऑल पीएमएस. सो मैं कोई एक पीएमएस की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल 9 पीएमएस है, 9 के 9 में किसी ने नहीं किया है. So we can definitely use this portfolio tool, the analysis tool, to actually show to the client. सर कोई अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं मीट कर रहा है, तो देन रिव्यू करके अपने को स्टेप्स लेने चाहिए. आई थिंक सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट हियर. एंड वी कैन एक्चुअली आस्क द क्लाइंट, सर इफ यू हैव एनी पीएमएस यू कैन जस्ट शेयर द अकाउंट स्टेटमेंट, आई विल डू अ रिव्यू एंड आई टेल यू हाउ इट इज डूइंग. आपको भी पता चल जाएगा सर, अगर अच्छा कर रहा है तो रहने दो सर, बट आपको समझ में तो आएगा कि अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है. फर्स्ट इज, if you just look at numbers, absolute numbers, जैसे I gave you an earlier example, where the client said यार नहीं मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, 25% रिटर्न दिया है. सर बट निफ्टी ने क्या दिया है वो आपको पता तो होना चाहिए. अगर निफ्टी नहीं बीट कर रहा है तो फिर पीएमएस इज नॉट
That's where we come in, where we can actually tell the client कि sir कि ये क्या कहाँ पे gaps है and how we can rectify it. So PMS again, I think so last 3 years जो numbers दिख रहे हैं, numbers are not showing the way it is, and we can definitely show this to the client कि क्यों ये नहीं करना चाहिए, and we can help you out with the reviews on the PMS space as well. Lastly, I will just share the equity review also, stocks review. जब client stock portfolio देता है, and clients have a lot of stocks, and stocks में client का generally ये रहता है कि नहीं मुझे stocks करना है, loss making होगा तो भी वो hold करता है, right? So what do we say here in equity is the objective is to analyze your stock portfolio basis returns and risk. सर risk और return basis पे वो कैसे perform कर रहा है. So most of the clients का portfolio ऐसे बनता है कि he takes tips from friends, families, brokers, कि broker ने बता दिया, किसी friend ने बता दिया, किसी family member ने बता दिया, या market rumor सुना है, या कोई inside news है, जिसके basis पे the client invests. That's a very inefficient way of actually investing in equity. See, equity as an asset class and equity as an instrument to invest in, it is not कि आप कोई बोले और आप ले लो, वो बताएगा नहीं बेचना है नहीं बेचना है. It is an asset class which requires a lot of time and it requires skill to actually manage your portfolio. So stock, एक भी stock अगर आप लेते हो तो उसमें बहुत से events होते हैं. Every quarter there is result. रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का कॉल होता है, मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन आता है, उसमें काफी निटिग्रिटीज होती है, राइट? जो एक रिसर्च एनालिस्ट एक्चुअली एनालाइज करके वो रिपोर्ट निकालता है, पर उसमें बहुत सी कंटिन्यूस वर्क है, कंटिन्यूस यू हैव टू बी ऑन ट्रैक. कोई हफ्ते में या महीने में कोई न्यूज आ गई तो यू शुड नो दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट. So all this research will require time and expertise. If you have the time, if you have the expertise, then you manage your portfolio, sir. But agar nahi hai, then you give it to someone who will do it for you. That's where mutual fund comes in. Because the fund manager is an expert who does this part for you. He has all the research analysts at his disposal, where he can go and ask. And he can tell him, yaar, ye kya lag raha hai, ye kya nahi lag raha hai, and then he decides and actually manages the portfolio. So what we are saying is that unorganized input से अगर आप portfolio बना रहे हो तो return inconsistent होंगे और volatility बहुत ज्यादा होगी. अगर organized way में बनाओगे तो consistent returns होंगे and volatility भी कम होगी. So here also we've just taken a sample portfolio. Now this portfolio has 27 stocks, and if you look at the number of at the stocks, now the stocks mostly are good. मतलब नाम जो है ना, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक है, एचयूएल है, इन्फोसिस है, आईटीसी है, एचडीएफसी लाइफ है, कोटक महिंद्रा बैंक है, मारुति है, स्टेट बैंक है, टीसीएस है, टाटा मोटर्स है. सो ही इज बेसिकली पिक्ड ऑल द गुड वेल नोन स्टॉक्स, द ब्लू चिप स्टॉक्स, द नोन स्टॉक्स. ये कंपनीज बंद तो नहीं होगी एटलीस्ट. नाउ एक और चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट को क्या लगता है, व्हेन द मार्केट मूव्स अप ना, क्लाइंट को लगता है यार 10 अच्छी ब्लू चिप कंपनीज लेके रख देते हैं, 10 साल में मुझे रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे. आई थिंक सो दिस अ वेरी बिग मिथ विच हैज टू बी ब्रोकन. मतलब क्या कर रहा है, क्लाइंट को लग रहा है कि यार नहीं ठीक है, मैं एचडीएफसी बैंक लेके बैठ जाता हूँ, मेरे को रिटर्न्स आ ही जाएगा. मैं कोटक बैंक लेके बैठ जाता हूँ, मेरे को रिटर्न्स आ ही जाएगा. मैं रिलायंस लेके बैठ जाता हूँ, मुझे कभी ना कभी रिटर्न्स आ ही जाएगा. The answer is that, because it is not that what has moved in the past will move in the future as well. We are not saying that HDFC Bank band ho jayegi. HDFC Bank will continue, but not necessarily it will deliver. ना, it has to deliver. मतलब उसका परफॉर्मेंस देखना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाइंडली कुछ भी ले लूं. लास्ट 10 साल पहले जो फैंसी स्टॉक्स थे या जो वेल नोन स्टॉक्स थे जिसपे बहुत कॉन्फिडेंस था, आज अगर देखें तो वो स्टॉक्स का नामो निशान नहीं है. Real estate as a sector was gung-ho in 2008-9. JP Associates, Unitech, Suzlon, Wind Energy, lot of buzz. अगर मैं उस टाइम पे वो स्टॉक्स लेके बैठ जाता, 10 साल में मेरा रिटर्न्स हार्डली, मेरा आई थिंक सो कैपिटल का मुझे 10-15% ही मिलता. I don't know where the Unitech stock is. JP Associates is trading at I think so sub 2 digit. Suzlon is 2 digit. It was almost 1 digit. So it is not that you just buy good stocks and you hold it
and your returns will come? The answer is no, boss. Stock investments requires skill, requires expertise, requires time. अगर आपके पास नहीं time है, and if you want to do this, this will not help you. कितने cases है? ITC as a stock was not moving for a certain period. Maruti was not moving. Reliance from I think so 2009 to 2020 COVID तक चला ही नहीं था. HDFC Bank last 3 years, 4 years, no returns. Kotak Bank last 3 years, 4 years, no returns. Asian Paints last 3 years, 4 years, no returns. So we need to break this myth of the client कि नहीं मैं कोई भी 10 स्टॉक लेके बैठ जाऊं, ये तो खराब तो नहीं होंगे, ये बंद तो नहीं होंगे. सर बंद नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, बट रिटर्न्स क्या डिलीवर करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है ना. मैं रिस्क क्या ले रहा हूं और रिटर्न क्या डिलीवर कर रहा है. सो द ऑब्जेक्टिव बिकम्स वेरी क्रिटिकल हियर. So here this client had a portfolio value of 46 lakhs spread across 27 stocks. Now where what we've done is कि हमने ये पोर्टफोलियो लिया है और यही अज्यूम किया है कि अगर ये क्लाइंट ने 3 साल पहले इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता तो क्या रिटर्न होते थे, और 5 साल पहले अगर इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता तो क्या रिटर्न होते थे. एंड वी आर कंपेयरिंग इट विद आवर मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड एंड वेल्थ प्लस. सो last 3 years this client's portfolio would have delivered 18%. Standard deviation रिस्क जो मैंने अभी म्यूचुअल फंड में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस पोर्टफोलियो इज 25%. निफ्टी का स्टैंडर्ड डिविएशन इज 12.3%. मतलब सर आपने रिटर्न, आपने रिस्क ऑलमोस्ट डबल लिया है निफ्टी का, राइट? डबल लिया है. तो इफ आई एम टेकिंग हायर रिस्क देन माय रिटर्न्स आल्सो शुड करस्पॉन्ड. लेट्स लुक एट द नंबर. 3-year returns of this portfolio would have been 18%. Nifty has delivered 16%. My model portfolio has delivered 23%. My Wealth Plus portfolio has delivered 21%. Right? 5-year return of this portfolio is 15% per annum. Nifty is almost 15%. My mutual fund portfolio is 19% and Wealth Plus portfolio is 18%. Standard deviation, as I said, current portfolio standard deviation is 25. My model portfolio, Wealth Plus portfolio is 9.6. Nifty is 12.65. Efficiency ratio, return divided by risk. For 1 unit of risk, the client portfolio has delivered 0.73. My Wealth Plus portfolio has delivered 2.15. Nifty has delivered 1.25. So, sir, returns isolation में देखना is incorrect. Risk के साथ देखना बहुत जरूरी है. तो sir, per unit of risk पे, you've not even done better than Nifty, sir. आपका efficiency ratio is 0.73 because your risk is so high. तो सर ये रिस्क लेके ideally have you delivered that extra return? The answer is no. 6.52 lakhs, that's the additional value he would have created if he would have invested in my portfolio instead of his portfolio over a 3-year period, and 8 lakhs over a 5-year period. That's the value which we have generated. So here first is कि क्यों स्टॉक नहीं करना चाहिए. I think so ये establish करना बहुत जरूरी है. If the client is doing it on his own, और अगर वो टाइम एक्सपर्टीज है उसमें और स्किल है तो लेट हिम डू इट. वी कांट, अगर उतना टाइम दे रहा है तो कर लो सर, बट अगर नहीं है उतना टाइम तो देन गिव इट टू समवन हु विल डू इट फॉर यू, एंड दैट्स वेयर म्यूचुअल फंड कम्स इन, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट जिस्ट ऑफ हिज ओवरऑल पोर्टफोलियो, दैट व्हाट दिस पोर्टफोलियो वुड हैव डिलीवर्ड कंपेयर्ड टू माय मॉडल पोर्टफोलियो. देन वी आर गिविंग अ जिस्ट ऑफ कि यार 27 में से 20 stocks are underperforming the AR Wealth Plus portfolio in most time frames. Now I'll explain this. तो इसके साथ एक और Excel है. Just let me share the Excel. I hope the Excel is visible. Can anyone confirm, and then I'll just explain the Excel. Is the Excel visible? Now is it visible? I've just shared it again. Thank you. So यहाँ पे what we've done is we've done a very basic stat where what we are doing is we are comparing the client's stock portfolio, मतलब individual stock, उसका 1 साल, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, लास्ट 2 ईयर का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न, लास्ट 4 ईयर का रिटर्न एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न. ये हमने 5 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं पर एनम एंड वी कंपेयर्ड दैट विद माय मॉडल पोर्टफोलियो रिटर्न्स. अगर क्लाइंट के पोर्टफोलियो ने मेरे मॉडल पोर्टफोलियो से बेटर रिटर्न दिए हैं देन आई गिव हिम 1 पॉइंट. अगर उसके पोर्टफोलियो ने मेरे मॉडल पोर्टफोलियो से कम रिटर्न दिए हैं देन आई गिव हिम अ 0.
So just give you an example. Suppose ये Avenue है, Avenue का 0.2 है, and my model portfolio has delivered 33%. So that's why he will get a 0. If so, यहाँ पे 5-year period में it has delivered 20.47. My model portfolio has delivered 90. मतलब उसने stock ने better किया है. So I give him a 1 point here. Right? Basic simple math लिया है कि sir 5 observations लिए हैं. 1 year का returns, last 2 year का returns per annum, last 3 years का returns per annum, last 4 years का returns per annum, and last 5 years का returns per annum. Right? Now, and if stock is done better, then it's a 1 point. If my portfolio has done better, then there's a 0. Now, in this 27 stock portfolio, 20 stocks. तो हमने क्या किया, ये 5 साल में से मैं क्या बोल रहा हूँ क्लाइंट को कि सर अगर कोई भी 5 साल में से अगर आपके स्टॉक ने 3 or more times मेरे पोर्टफोलियो को बीट किया है, then you hold that stock. But अगर 2, 1 or 0 है, then it's better you move to my model portfolio, ना sir, because my model portfolio is doing much better. So simple stat, and this is a very easy actionable for the client. ये actionable के लिए बहुत easy है, client को हम बता सकते हैं कि सर नॉन परफॉर्मिंग वाले तो हटा लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट के पास स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है, 30, 40, 50 स्टॉक होते हैं, तो बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, इससे कंसोलिडेट भी होता है, कॉन्सेंट्रेट भी होता है, and it helps. So that's the first part where we can actually move some immediate actionable in the stock portfolio. So what we've done is, out of the 5 years, whatever stock has not beaten my model portfolio 2 times, 1 times or 0, अगर ये 3 नंबर है, then we are suggesting sir you move out. अगर आपके स्टॉक ने 3, 4 या 5 बार आउट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 5 बार अगर मेरे पोर्टफोलियो को बीट किया तो आप होल्ड करो. तो इसमें 27 स्टॉक्स में से 20 स्टॉक्स ऐसे है जिसने मेरे पोर्टफोलियो को शायद 2 बार या 1 बार या 1 भी बार नहीं बीट किया है, तो ये तो मूव हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई वाज हाइलाइटिंग कि यार इवन गुड नेम्स एंड लास्ट 5 years it has not beaten my portfolio, then why you want to stay invested? So it is not that the name is good तो ये चली जाएगा. And we all know what is happening with HDFC Bank, we all know what is happening with Kotak Bank, and we all know what is happening with Asian Paints, right? So buying good stocks and just holding it for the next 10 years is not something, because नहीं दिख रहा है ना सर, 5 साल में भी नहीं बीट किया है, तो क्यों रखना है? अगर अच्छा करेगा तो फंड मैनेजर लेगा वो स्टॉक सर, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेगा. But if I don't know and if I don't have the expertise, then I should not do it. That's what we are suggesting. So out of this 27, 20 stocks तो सर मूव करके आप रियलाइन कर लो, ये बाकी 7 स्टॉक बाद में कर सकते हो. At least this 20 though you can immediately move. That's the actionable which we are showing in the direct equity, where we can tell him. So this is the equity review format. This is the actionable there, where we can tell him sir कि ये 27 में से 20 स्टॉक तो आप निकाल सकते हो. So that was on the direct equity analysis. We also show which stocks are not considered, because the stocks which have not completed 1 year, we don't have the data. So that's, those stocks is something which we don't consider in the equity review format, which is mentioned in the slides. So I'll just summarize and then I'll open the floor for questions. I know I have taken a longer time, but I hope it's fruitful. So we discussed first the success mantras, which has helped our partners in the last year. 3 main parameters was the balance sheet approach. You review the portfolio of the client, because review is very critical. You can set this habit and we can actually do a huge number. Matlab 7 per partner was very less. I think so we can do 7 per month. I think so more, every partner can do 7 per month, because पोर्टफोलियो रिव्यू लाने में कुछ पूछना नहीं है, क्लाइंट को सिर्फ यही बोलना है सर आपके पोर्टफोलियो का एक रिव्यू करके मैं आपको दिखाता हूं कि पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्म किया है. यू विल गेट एन आइडिया कि सर आपका पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है. यू कैन शेयर 1 pages मार्केटिंग, आप बीडीएम से कनेक्ट करो, देयर इज 1 pager ऑन द पोर्टफोलियो रिव्यू विच यू कैन शेयर विद योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, जहां पे उसको डिटेल्स मिलेगी, विच वहां पे वो कनेक्ट करता है, येस करता है, आई वुड वांट टू नो मोर, एंड यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद दोस क्लाइंट्स. मतलब वी विल हेल्प यू देयर आल्सो how you can reach to your existing clients. You can share this 1 pager, and if the client responds, you can share multiple 1 pagers. You can schedule the 1 pagers, right? And जो client respond करता है उससे आप बात करो, उसको बोलो सर आपका पोर्टफोलियो एक रिव्यू कर लेते हैं, बाहर वाला जो पोर्टफोलियो है समझ में आएगा सर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. एंड आई डोंट थिंक सो द क्लाइंट विल से, क्यों ना बोलेगा क्लाइंट यार उसको. अगर मुझे, मैं अगर एक क्लाइंट हूं और मुझे अगर आप आके बताते हो कि सर मैं आपको बताता हूं आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न्स क्या है, एक रिव्यू समझ में आएगा, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, कैसे प्लेस्ड है, I think the client will not say no.
So this is a very easier pitch. So आप review लेके आओ and then you and the BDM can do the pitch together of the portfolio review. So that's the first part कि portfolio review करना बहुत important है, because we've seen that the clients who have converted with the portfolio review have got 35 lakh monies versus normal जो सब clients का था उसका 12 lakh का ticket था. So there the gap was there. Second important point which helped the client, the partners last year in doing good business was the knowledge bites. So we share a lot of knowledge data points. So I'll do a second webinar mostly next to next week where I'll mention the data. I'll share it on the group where we'll cover the knowledge bites. We'll cover the notes which we are sharing, and we are sharing this every monthly. So you can use that कि उसमें market क्या लगता है, and you can share a lot of information with the client. So I'll cover that in the next session. And the third one was the activities, the marketing activities, how we can generate more leads. So that is the broad thing which we covered. Next, what we did is we looked at the review formats. Now, one was the MF review audit format, where if you have the cash statement of the client, we are actually showing him the number. कि सर कितना रिटर्न है, उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे क्या रिटर्न है, बिकॉज अगर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू क्लाइंट्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो यू वुड नॉट नो दैट how that portfolio is doing better than Nifty or not. Is it doing better than my model portfolio or not? What is the number of categories, the number of schemes, kitna large cap, mid cap, small cap mein allocation hai. So a lot of data points, a lot of talking points you have with the client. Again, जिसका cash statement नहीं है और आपके पास उसका अगर mutual fund का holding है, so you can share that also. We can do the review in the other format where we show similar data points. We can't show him his returns, but we show him the standard deviation. We can show him the journey. We show him the health card, the health, मतलब एक जैसे हेल्थ रिपोर्ट निकलती है वैसे पोर्टफोलियो रिव्यू की रिपोर्ट निकाल के दे रहे हैं हम, जहां पे हम बता सकते हैं कि सर आपका पोर्टफोलियो का हेल्थ सही है नहीं है, अगर नहीं है तो क्या एक्शनेबल है. थर्ड इज दी पीएमएस रिव्यू. आई थिंक सो वहां पे बहुत स्कोप है, बहुत क्लाइंट्स है जहां पे वो मिथ में इन्वेस्ट किया है कि यार इक्विटी जब तेजी होती है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं. आई हैव शोन यू अ पीएमएस रिव्यू एंड इट्स एन एक्चुअल रिव्यू where the client is invested across 15 PMSs. मतलब उसने इंडस्ट्री ऑलमोस्ट का इंडस्ट्री का एक क्या बोलते हैं डेपिक्शन है. नन हैज डिलीवर्ड एंड उसमें भी 3 साल हो गए बट नहीं डिलीवर कर रहा है. निफ्टी को 60% से अंडर परफॉर्म किया है. सो मॉडल पोर्टफोलियो तो बहुत दूर की बात है. सो वहां पे हम क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि क्या है पीएमएस लिया है सर, तो उसका रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या था आपका और वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आई थिंक सो वो बहुत बेसिक चीज है जो शायद वो नहीं देखता होगा. सी एब्सोल्यूट नंबर्स, एज आई सेड, एब्सोल्यूट नंबर्स माइट बी मिसलीडिंग, बट एक्चुअल में उसका कंपैरिजन करना बेंचमार्क से बहुत क्रिटिकल है. दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन शो हिम. ऑफ कोर्स द डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो, ये एक और मिथ है कि यार 10 अच्छे स्टॉक लेके बैठ जाता हूं, वो नहीं चलते हैं. सी इट रिक्वायर्स स्किल एंड एक्सपर्टीज. आप कोई भी स्टॉक ले लो, अगर आप नहीं ट्रैक कर सकते हो, नहीं मॉनिटर कर सकते हो, तो प्लीज गिव इट टू समवन हु विल डू इट फॉर यू. डोंट प्ले विद योर मनी, राइट? एंड दिस पोर्टफोलियो रिव्यू विल गिव यू दैट डिटेल्स कि यार ये चल रहा है या नहीं चल रहा है. अगर चल रहा है तो ठीक है ना सर, करंटली रख दो, कंसोलिडेट तो कर दो. एटलीस्ट you will get some information on your portfolio. See, the ultimate objective is that out of the review, we are giving everything. एक प्लस है ना क्लाइंट के लिए, तो एक प्लस ही है. He is getting more information on his overall portfolio. He doesn't lose anything. मतलब क्या लूज है? क्लाइंट को कोई लॉस नहीं है, क्लाइंट का कुछ रिडेम्पशन नहीं हो रहा है. क्लाइंट को तो उसके पोर्टफोलियो के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है. He is getting more information that how my portfolio can do better than him. What is the thought process? What's the process behind it? So ideally, it's a win-win for the client because client doesn't have anything to lose. He just needs to share his portfolio. So we should definitely talk to our clients. See, you have multiple clients, partners. You all have clients. आपके existing clients है, आपके prospects भी है. Existing clients में not everything would be managed by you, right? There would be some portfolio जो बाहर का होगा. So we can review that portfolio and we can show it to the client कि सर क्या कर रहा है वो portfolio. So it helps you getting more monies, and it also helps the client in actually managing his portfolio better. So it's a win-win for the client, win-win for you as well, right? And of course, if you get more monies from the client and you distribute it and realign it in mutual fund and structured products, of course, you also benefit out of it. And as an organization, of course, we also benefit out of it. So it's a win-win for the client, win-win for you, and win-win for us as well, right? We also, यहाँ पे एक और चीज है कि जिस पार्टनर ने लास्ट 3 साल 4 साल में जो रिव्यू किए हैं, we recently had, we discussed today only in our morning huddle where one of the partner went to a client जिसने आई थिंक सो 4-5 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, उस टाइम रिव्यू किया था. He didn't move the entire portfolio. The partner and the BDM actually did the review again,
We showed him the difference that what he is losing. एक और बार रिव्यू किया. We went back to him. We showed him the difference कि सर आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू इतना हुआ होता, इतना है आप बता दो. तो उसने वो बता दिया था. सर निफ्टी में इतना रिटर्न आया होता और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न आया होता. There was a gap of approximately, I think so, 5 to 10% in the absolute number. The client immediately said that let's move it. Let's put the redemption and realign it. So it is not कि एक बार कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं है. We have to do this continuously. We can keep on doing this. We can keep on pitching the client at multiple times. It is not that एक बार कर लिया और हो गया, वैसा नहीं होगा. जैसे आपने कुछ रिव्यू किए होंगे 21 में, 22 में, 23 में, जहां पे क्लाइंट ने नहीं इन्वेस्ट किया होगा. We can go back to the client and we can tell him, sir, that this is the value. You show me your value and you know. So वो client ने तो मेरा प्रोसेस भी सुना है, उसने समझा है. कुछ ने इन्वेस्ट किया है, कुछ ने नहीं इन्वेस्ट किया है. We can go back to those clients also. So the scope is, I think, so huge, partner, and that's a very easy way of getting more money. See, one is that getting liquidity. कि client के पास आज 10 लाख है, 15 लाख है, वो मैं invest करता हूँ. But this portfolio size is huge. You can get his portfolio there. You can get a larger inflow from the client, and that's why that was the objective. That is what has had helped partners last year in getting more business and getting more AUM. I think so. Why not? It will help this year as well. It will help every year because what we are doing is we are trying to actually enhance the client's portfolio, right? And the client के लिए तो help ही है. So that was the thought process. Equity, of course, I explained. So these 4 formats, we can do the review, the TATs. We give the portfolio review in T+2 for equity, mutual fund, and the audit. PMS might take minimum 5 to 7 days. So you can keep a TAT of 5 to 7 days. If it gets earlier, we can do that. But the mutual fund and the stock portfolio review, we have a TAT of 2 days. We've been giving in 1 day. I think so. The ones who are doing it, they know. So there the TAT is max 2 days. It's like we can get the review done very quickly. So I open the floor for questions. Any questions, partners, you have, you can put it in the chat or the Q&A box, and I'll be happy to answer them. As I said, Devidas, it will take max 2 days. So, Vinod, there is a format where you can list the assets and the portfolio of the customers. There is one format. There is an Excel. You can connect with your BDM. He will share that Excel with you. But if you need to get the mutual fund portfolio, then you generate the cash. The stock portfolio, you can get his stock statement. And for PMS, you can get the account statement. And we can do the review. So cash is something which is very easy to generate. You just need to know the email ID of the client. ईमेल आईडी अगर कॉमन है क्लाइंट का, अगर 3-4 भी है तो 3-4 ले लो. सब पे हम कैश जनरेट कर सकते हैं. एंड व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट कोऑर्डिनेट विद द क्लाइंट एंड टेल हिम, सर कि आपको कैश जनरेट किया है, सर आपके पास आया होगा, आप मेल कर दो मुझे, एंड आई विल गेट द रिव्यू डन फॉर यू. राइट? सो इट इज नॉट अ हैसल फॉर द क्लाइंट आल्सो. Thanks, I think so. You know the cash. Any more questions? Any questions, partners? You can put it in the chat, and I will be happy to take them. So the ideal percentage, what we generally recommend, Mandar, is 60-40, 60. So out of 100 rupees which the client has, right, and 100 rupees across all asset classes, be it equity, debt, real estate, and gold, 100 rupees mein, the allocation is 60-40. 60% goes towards mutual funds, 40% goes towards structure. The 60% of mutual funds can further be bifurcated in equity mutual funds and debt mutual funds basis the client's risk appetite, right? So 60-40 overall mutual fund or structure का allocation है. Mutual funds में you can again do a 60% equity with 40% debt or a 100% equity and 0 debt basis the risk appetite and the time horizon which the client has. If the client is young enough, then he can go on 100% equity. If the client says say a 55-year-old and he might require liquidity in between, which he's not very sure, you can give him a 10 or 20% debt in the mutual fund 60% allocation, right?
I hope I've answered, Mandar. So there is one more question on part portfolio in DMAT and part in cash. So can do combined analysis. So we can do the combined analysis. We can't do the MF audit, but we will do the old format of mutual fund. Yogesh, we can do that. We can't do the cash because we can't do the audit because for that we need the cash statement because that's an autometer which has been built. But we can do the old format. That is for sure. Is it time to invest lump sum in model portfolio? So, Prajakta, market kya lagta hai? So that's the second session. I'll just give you a brief on that. So market kya lagta hai? Is it time to invest lump sum in model portfolio? So we don't look at कि यार अभी अच्छा लग रहा है, अभी खराब लग रहा है. We've selected and we've actually created that model of how to calculate the froth. कि froth calculation कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में फ्रॉथ है कि नहीं है. नाउ फ्रॉथ कैलकुलेट करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है. तो मीडियम टर्म में जनरली मार्केट मूव्स ऑन योर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, राइट? कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे परफॉर्म कर रही है. शॉर्ट टर्म में तो मार्केट कैन मूव टू ड्यू टू एनी रीजन, बट मीडियम टर्म इज वेयर द मार्केट मूव्स बेसिस द कॉर्पोरेट अर्निंग्स. मतलब कॉर्पोरेट्स में प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो व्हाट वी डू इज वी लुक एट द EPS of Nifty 50 companies because that's the benchmark. It gives me a picture for the Nifty. It gives me a snapshot, right? So Nifty 50 का अब अगर EPS देखो, करंट ईयर का जो EPS है एंड नेक्स्ट ईयर के लिए क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वो वाला जो नंबर है, दैट इज समथिंग व्हिच वी बीन ट्रैकिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. एवरी क्वार्टर वी कम आउट विद अ रिपोर्ट कि यार निफ्टी का EPS क्या है एंड क्या एक्सपेक्टेशन है. सो मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स फ्यूचर. मार्केट में पास्ट जो है वो ऑलरेडी प्राइस में है, बट मार्केट फ्यूचर डिस्काउंट करता है. तो व्हाट वी हैव डन इज वी ऑलवेज लुक एट द फ्यूचर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑफ निफ्टी, मतलब नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स क्या है. एंड द अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन पैरामीटर इज द पी मल्टीपल, व्हिच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. मतलब एक रुपए की अर्निंग के लिए मैं क्या प्राइस पे करता हूं फॉर बाइंग दैट स्टॉक और बाइंग निफ्टी, राइट? सो आज के लेवल के लिए मुझे करंट ईयर की फाइनेंशियल ईयर की EPS देखनी है, राइट? सो उसके बेसिस पे द मार्केट एट अ 20 का पी मल्टीपल, द वैल्यू कम्स इज दैट द मार्केट इज फेयरली वैल्यूड टुडे. नाउ क्लाइंट इज इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर, तो मुझे देखना है कि आज से एक साल बाद मार्केट की क्या वैल्यू हो सकती है, राइट? तो वो लेवल आता है अप्रोक्सीमेटली 24,200. तो यहां से ऑलमोस्ट 10-12% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन दी corporate earnings, right? Now when the client is investing for long term, he's not investing for 1 month, he's not investing for 2 months, he's not investing for a year. When we say the client should be investing for a 5-year period, right? So corporate earnings से देखें तो एक साल में निफ्टी 10 से 11% रिटर्न्स डिलीवर कर सकती है. करंटली द मार्केट इज फेयरली वैल्यू. व्हेन द मार्केट में अगर फ्रॉड ज्यादा हो जाता है, मतलब मार्केट करंट लेवल मतलब रीजनेबल लेवल से अगर से 3-4% 5% ज्यादा है, तो यू कैन स्टैगर इट फॉर अ मंथ. अगर करंट लेवल पे है, रीजनेबल लेवल पे है, तो यू कैन इन्वेस्ट लम सम. सो यूज दैट एज अ मेट्रिक टू डिसाइड कि यार इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रादर देन ईयर से. I think so. Use the froth wala metric. Of course, I'll cover it much more detail in the next session. But use that metric. क्या समझ में आएगा कि आज मार्केट फेयर लेवल पे है कि नहीं और क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है. I think so that will give you an answer of कि lump sum करना नहीं चाहिए कि नहीं करना चाहिए. I think so आज के लेवल में मार्केट is at a fair value level, so you can invest lump sum as well. और अगर करना भी है अगर आपको STP, तो you do it for a 1 month. You don't stagger it for more than that. So it is not in rolling return basis because this, madam, we are showing the actual returns. So I can't show rolling returns. I'm not showing any projections. I'm showing the actual returns of the client there. So actual returns में समझ में आ जाएगा क्लाइंट को कि उसने कितना रिटर्न बनाया है और कितना मेरे पोर्टफोलियो ने या निफ्टी ने डिलीवर किया है. So I'm not showing rolling returns. I'm showing the actual returns of the client which he has delivered. वैसा ही. CAM statement, see, there are certain dependencies on the CAM statement, and we can't influence that. But I think so we can do with whatever we have. See, cash statement में almost
यू विल गेट 70, 80, 90% ऑफ द पोर्टफोलियो. तो एटलीस्ट 90% पे तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि क्या हो रहा है. वी कैन डू दी 100%, पर वो मैं नॉर्मल रिव्यू कर सकता हूँ, बट 70-80% पे तो मैं बता सकता हूँ मैडम कि क्या हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में. दैट इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेटर. आई थिंक सो वो तो बता सकते हैं. लेट्स नॉट टेक दैट एज अ डील ब्रेकर के यार नहीं मैं उसको नहीं बता सकता. एटलीस्ट 70-80% तो मैं बताऊँ ना क्लाइंट को, उसको पता ही नहीं है, मैं उस पर तो फोकस कर सकता हूँ. आई थिंक सो दैट वुड ऑल्सो हेल्प. अगर कुछ स्कीम्स या कुछ कैटेगरीज नहीं कवर होती है, या कुछ जैसे डीमैट में कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो एटलीस्ट यू कैन शो हिम कि सर ठीक है ये कैश स्टेटमेंट वाला तो देख लो सर वो क्या है, डीमैट वाला मैं आपको दूसरे वे में बता सकता हूँ. राइट. So you can discuss that with the client, because see this is not something which is a problem with us, this is an industry problem ना. I can't help that. मैं कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता ना, वैसा है इसीलिए. Parthiban, mostly the next session would be I think so the first Saturday of June. That's what we are planning, which is I think so first of June is something which we are planning for the next session. And I'll explain on I'll communicate the third session kab hoga. Tentatively, we are planning in the last week of May or 1st June. That's the tentative date. Any more questions? Would do that, Rajata, would do that for the structures as well. Yeah, these sample slides are there with the BDMs. You can take it from the BDMs. They have the sample PDFs. Devendra, I didn't get your question. On my MF is allowed. I didn't get that question. If you can just clarify. So on the review, we suggest that you realign as per the strategy, right? You realign as per the strategy, which is 60% mutual funds and 40% structure. So we would suggest to realign as per the strategy. Of course, the recording will be shared. You can collect it from your BDM. Just give us 2 hours, because once the recording is generated, we'll share the link. So you can utilize the link and you can see the recording again. Thank you, ma'am. So I just have one request, partners. Thank you for spending. Actually, we spent almost 2 hours, and I'm really sorry for the disturbance and the noise issues which you all had. So thank you for bearing with me. But I just have one request. I hope this session was useful for you. There are a lot of data points which you can show to a client. It actually helps him. And getting a portfolio review is something which is very easy. I think so. Let's focus on this activity, because you'll be able to get more money. You'll get to know more about the client कि उसकी बैलेंस शीट की साइज क्या है, उसकी पोर्टफोलियो की साइज क्या है, राइट. यूज दिस इन एवरी मीटिंग विच यू डू. सो डोंट स्किप. कि अगर कोई क्लाइंट होगा जो आपको लगता है बहुत स्मार्ट होगा तो उससे आप नहीं मांगोगे, वैसा मत करो. या कोई क्लाइंट होगा आपको लगता होगा कि उसके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो मैं नहीं मांगता हूं. डोंट स्किप दिस प्रोसेस. एनी प्रोस्पेक्ट और एनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट यू हैव, you know it के पूरा पोर्टफोलियो नहीं देता है क्लाइंट. We need to keep on asking for the portfolio review, not once but multiple times. So the partners who are starting new, you already have an existing practice, be of mutual funds, be of insurance or any other practice which you are doing, right? अगर आप वो सब चीज कर रहे हो तो आपके पास क्लाइंट होंगे, क्लाइंट के पास पोर्टफोलियो होगा. आप क्या दे रहे हो, आप क्लाइंट को एक वैल्यू एडिशन दे रहे हो कि सर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बता रहा हूँ. सो द क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमको पूछना है, एंड पूछने के लिए भी देयर इज अ वे. आप व्हाट्सएप भेज दो, क्योंकि एवरीवन हैज अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर देयर क्लाइंट्स और देयर प्रोस्पेक्ट्स. सो कनेक्ट विद योर बीडीएम एंड टेक दैट वन पेजर. कॉल सम क्लाइंट्स, मतलब आप कॉल भी कर सकते हो क्लाइंट्स को जिसके साथ आपका अच्छा कनेक्ट है. आप सीधा कॉल करके बोल सकते हो कि सर पोर्टफोलियो रिव्यू करना था, आपका ईमेल आईडी पता दो. या आपके पास अगर ईमेल आईडी ऑलरेडी है तो आप सिर्फ फोन करके बोल सकते हो क्लाइंट को कि सर इस ईमेल पे आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो मैं एक कैश स्टेटमेंट जनरेट कर रहा हूँ,
जस्ट आप वो शेयर कर दो, एक रिव्यू करते हैं सर, एटलीस्ट समझ में तो आएगा अपना पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है. सो यू ऑल्सो कैन प्रेजेंट इट इन दैट वे, बट डोंट स्किप दिस स्टेप, because we've seen that this helps. We've seen a number of 7 portfolio reviews in a year. I think so 7 is something which every partner can do every month, because इसमें कुछ करना नहीं है, क्लाइंट को कुछ पिच नहीं करना है, सिर्फ उसको बताना है सर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लेना है. तो जो नए हैं, जिनके पास क्लाइंट्स है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है या प्रोस्पेक्ट्स, so go to both. Don't go only to prospects, go to your existing clients also. You might not have the entire portfolio of the client. पूछने में हार्म नहीं है, ना ही बोल सकता है क्लाइंट, और तो कुछ नहीं कर सकता है, राइट? अगर आप 10 को पूछोगे, अगर 5 ने हाँ भी बोल दिया तो अपना काम हो जाता है. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जिन्होंने रिव्यू यूज किया है और जिनके पास क्लाइंट्स है, यू कैन रीच आउट टू बोथ द क्लाइंट्स हु हैव इन्वेस्टेड. उससे आप पोर्टफोलियो, क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो नहीं दिया होगा क्लाइंट ने, तो आप बाकी का पोर्टफोलियो ला सकते हो, बाहर का पोर्टफोलियो फिर से रिव्यू कर सकते हो. जिस क्लाइंट से स्टार्ट किया, जिससे रिव्यू नहीं मांगा है, उससे आप रिव्यू मांग सकते हो. तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. जो प्रोस्पेक्ट्स है जिसको आप मिले हो, उससे पोर्टफोलियो रिव्यू ले सकते हो. सो द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज. इट्स लाइक एग्जिस्टिंग ही डेटाबेस जो है अपने पास, वहां से ही हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वेरी सिंपल टूल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस. And this is complimentary. There is no charge to the client, and we are giving it in a very professional way. ऐसा नहीं है कि मैं उसको 4 चीज कुछ हवे में बता रहा हूँ, right? I'm giving him pointers basis my selection process, basis my processes. So I would definitely urge partners that, boss, this is something which you should definitely use for all your clients. It will actually help you in getting more AUM and more monies for you, and it will help your clients as well. So that's it from my side. Thank you, partners, for patiently listening to me. And we will definitely connect for the next session soon. I will put it in the group, and of course, your BDMs will also connect with you. So thank you very much and have a great weekend. Thank you.